श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं चतुर्थः स्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन। सूत उवाच इति पृष्टस्तदा विप्रो राज्ञा पारीक्षितेन वै उवाच विस्तरात् सर्वं व्यासा सत्यवती सुतः। जन्मेजयोऽपि धर्मात्मा निर्वेदं परमं गतः। चित्तं दुश्चरितं मत्वा वैराटे तनयस्य वै तस्यैवोद्धरणार्थाय चकार सततं मनः। विप्रावमान पापेन यमलोकं गतस्य वै पुन्नाम नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं स्वकं। पुत्रेति नाम सार्थं स्यात् तेन तस्य मुनीश्वरः। सर्पदृष्टं नृपं श्रुत्वा हर्म्योपरिमृतं तथा विप्रशापात् औत्तरेयं स्नानदानविवर्जितं। पितुर्गतिं निशम्यासौ निर्वेदं गतवान् नृपः। पारीक्षितो महाभागा संतप्तो भयविह्वलः। पप्रच्छातमुनिं व्यासं गृहागतमनिन्दितः। नरनारायणस्येमां कथां परमविस्तृतां। व्यास उवाच स यदानेतो रौद्रो हिरण्यकशिपुर्नृप अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रह्लादो नाम तत्सुतः। तस्मिञ्छासद्दैतेन्द्रे देवब्राह्मणपूजके मखैर्भूमौ नृपतयो यजन्ता श्रद्धयान्विता। ब्राह्मणाश्च तपोधर्मतीर्थयात्राश्च कुर्वते। वैश्याश्च स्वस्ववृत्तिस्तथा शूद्रा शुश्रूषणे रता। नृसिंहेन च पाताले स्थापितासोऽथ दैत्यराट्। राज्यं चकार तत्रैव प्रजापालनतत्परः। कदाचित् भृगुपुत्रोऽथ च्यवनाख्यो महातपः। जगाम नर्मदां स्नातुं तीर्थं वै व्याहृतीश्वरं। रेवां महानदीं दृष्ट्वा तस्यामवातरत्। उत्तरन्तं प्रजग्राह नागो विषभयङ्करः। गृहीतो भयभीतस्तु पाताले मुनिसत्तमः। सस्मार मनसा विष्णुं देवदेवं जनार्दनं। संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्विशो भून्महोरगः। न प्राप च्यवनो दुःखं नीयमानो रसातलं। द्विजिह्वेन मुनिस्त्यक्तो निर्विण्लेनातिशङ्किना। मां सपेत मुने क्रुद्धस्तापसोऽयं महानिति। चचार नागकन्याभिः पूजितो मुनिषत्तमः। विवेशाप्यथ नागानां दानवानां महत्पुरं। कदाचित् भृगुपुत्रं तं विचरन्तं पुरोत्तमे ददर्श दैत्यराजोऽसौ प्रह्लादो धर्मवत्सलः। दृष्ट्वा तं पूजयामास मुनिं दैत्यपतिस्तदा। पप्रच्छ कारणं किं ते पातालागमने वद। प्रेषितोऽसि किमिन्द्रेण सत्यं ब्रूहि द्विजोत्तम। दैत्यविद्वेषयुक्तेन मम राज्यदिलीक्षया। च्यवन उवाच किं मे मघवता राजन् यदहं प्रेषिता पुनः। दूतकार्यं प्रकुर्वाणा प्राप्तवान् नगरे तव। विद्धि मां भृगुपुत्रं तं सुनेत्रं धर्मतत्परं। मा शङ्कां कुरु दैतेन्द्र वासव प्रेषितस्य वै। स्नानार्थं नर्मदां प्राप्ता पुण्यतीर्थे नृपोत्तम। नद्यामेवावतीर्णोऽहं गृहीतश्च महाहिना। जातोऽसौ निर्विशा सर्पो विष्णोः संस्मरणादिव। मुक्तोऽहं तेन नागेन प्रभावात् स्मरणस्य वै। अत्रागतेन राजेन्द्र मयाप्तं तव दर्शनम्। विष्णुभक्तोऽसि दैतेन्द्र तद्भक्तं मां विचिन्तय। व्यास उवाच तन्निशम्य वचाश्लक्ष्णं हिरण्यकशिपोः सुतः। पप्रच्छ परया प्रीत्या तीर्थानि विविधानि च। प्रह्लाद उवाच पृथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिषत्तम। पाताले च तथाकाशे तानि नो वद विस्तरात्। च्यवन उवाच मनोवाक्काय शुद्धानां राजस्तीर्थं पदे पदे। तथा मलिनचित्तानां गङ्गापि कीकटाधिका। प्रथमं चेन्मनः शुद्धं जातं पापविवर्जितं। तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वै। गंगातीरे सर्वत्र वसन्ति नगराणि च। ब्रजाश्चैवाकराग्रामा सर्वे खेटास्तथा परे। निषादानां निवासाश्च कैवर्तानां तथा परे।
हूणभङ्गखसानां च म्लेच्छानां दैत्यसत्तमा पिबन्ते सर्वदागाङ्गं जलं ब्रह्मोपमं सदा स्नानं कुर्वन्ति दैतेन्द्र त्रिकालं स्वेच्छया जना तत्रैकोऽपि विशुद्धात्मा न भवत्येव मारिष किं फलं तर्हि तीर्थस्य विषयोपहतात्मसु कारणं मन एवात्र नान्यद्राजन् विचिन्तय मना शुद्धि प्रकर्तव्या सततं शुद्धिमीक्षता तीर्थवासी महापापी भवेत्तत्रात्मवञ्चनात् तत्रैवाचरितं पापं मानन्त्याय प्रकल्पते यथेन्द्रवारुणं पक्वं मिष्टं नैवोपजायते भावदुष्टस्तथा तीर्थे कोटिस्नातो न शुध्यति प्रथमं मनसा शुद्धि कर्तव्या शुभमीक्षता शुद्धे मनसि द्रव्यस्य शुद्धिर्भवति नान्यथा तथैवाचार शुद्धि स्यात् ततस्तीर्थं प्रसिद्ध्यति अन्यथा तु कृतं सर्वं व्यर्थं भवति तत्क्षणात् हीनवर्णस्य संसर्गं तीर्थे गत्वा सदा त्यजेत् भूतानुकम्पनं चैव कर्तव्यं कर्मणा धिया यदि पृच्छसि राजेन्द्र तीर्थं वक्ष्याम्यनुत्तमं प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम् अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले पावनानि च स्थानानि बहूनि नृपसत्तमा व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नैमिषं गन्तुमुद्यतः नोदयामास दैत्यान् वै हर्षनिर्भरमानसः प्रह्लाद उवाच उत्तिष्ठन्तु महाभागा गमिष्याम्योद्य नैमिषं द्रक्ष्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवास समच्युतम् व्यास उवाच इत्युक्त्वा विष्णुभक्तेन सर्वे ते दानवास्तदा तेनैव स पातालान् निर्ययुः परया मुदा ते समेत्य च दैतेया दानवाश्च महाबला नैमिषारण्यमासाद्य स्नानं चक्रुर्मुदान्विता प्रह्लादस्तत्र तीर्थेषु चरन् दैत्यैः सरस्वतीं महापुण्यां ददर्श विमलोदकां तीर्थे तत्र नृपश्रेष्ठः प्रह्लादस्य महात्मनः मना प्रसन्नं सञ्जातं स्नात्वा सारस्वते जले विधिवत् तत्र दैतेन्द्र स्नानदानादिकं शुभे चकाराति प्रसन्नात्मा तीर्थे परमपावने। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे प्रह्लाद तीर्थयात्राणो नामाष्टमो अथ नवमः प्रह्लाद जी का तीर्थयात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पहुँचना और वहाँ नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रह्लाद को नर नारायण का परिचय देना। व्यास उवाच कुर्मस्तीर्थविधिं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः नग्रोधं सुमहक्षाय मपश्यत् पुरतस्तदा ददर्श बाणा नपरान् नानाजातीयकांस्तदा गृध्रप्रक्षयुतास्तीव्रान् छिलाधौ तान् महोज्ज्वलान् चिन्तयामास मनसा कस्ये मे विशिखास्त्विह ऋषीणामाश्रमे पुण्ये तीर्थे परमपावने एवं चिन्तयतानेन कृष्णाजिनधरौ मुनि समुन्नतजटाभारौ दृष्टौ धर्मसुतौ तदा तयोरग्रे धृते शुभ्रे धनुषी लक्षणान्विते सार्गमाजगवञ्चैव तथाक्षय्यौ महेशुधे ध्यानस्थौ तौ महाभागौ नरनारायणाभ्रसे दृष्ट्वा धर्मसुतौ तत्र दैत्यानामधिपस्तदा क्रोधरक्तेक्षणस्तौ तु प्रोवाचासुरपालकः किं भवद्भ्यां समारब्धो दम्भो धर्मविनाशनः न श्रुतं नैव दृष्टं मे संसारेऽस्मिन् कदापि तपसश्चरणं तीव्रं तथा चापस्य साधारणं विरोधोऽयं युगे चाद्ये कथं युक्तं कलिप्रियं ब्राह्मणस्य तपोयुक्तं तत्र किं चापधारणं क्वजटाधारणं देहे क्वे सुधी च विडम्बनं धर्मस्याचरणं युक्तं युवुर्दिव्यभावयो। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा नरा प्रोवाच भारत का ते चिन्तात्र दैतेन्द्र वृथा तपसि चावयो सामर्थ्ये सति यत्कुर्यात् तत्सम्पद्येत तस्य हि आवां कार्यद्वये मन्दत् समर्थौ लोकविस्तृतौ युद्धे तपसि सामर्थ्यं त्वं पुनः किं करिष्यसि गच्छमार्गे यथा कामं कस्मादत्र विकथसे ब्रह्मतेजो दुराराध्यं न त्वं वेदविमोहितः विप्रचर्चा न कर्तव्या प्राणिभिः सुखमीप्सुभिः। प्रह्लाद उवाच तापसौ मन्दबुद्धिस्थौ मृषा वां गर्वमोहितौ मयि तिष्ठति दैतेन्द्र धर्मसेतुप्रवर्तके
न युक्तमेतत्तीर्थेऽस्मिन् धर्माचरणं पुनः काशक्तिस्तव युद्धेस्ते दर्शयाद्य तपोधन। व्यास उवाच तदा कर्णवचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाचः युध्यस्वाद्य मया सार्धं यदि ते मतिरीदृशी अद्य ते स्फोटयिष्यामि मूर्धानामसुराद्धम युद्धे श्रद्धा न ते पश्चात् भविष्यति कदाचन। व्यास उवाच तन्निशम्य वचस्तस्य दैत्येन्द्र कुपितस्तदा प्रह्लादो बलवानत्र प्रतिज्ञामारुरोह सः येन केनापि उपायेन जेष्यामि तावुभावपि नरनारायण उद्दान्तावृषि तपिसमन्वितौ। व्यास उवाच इत्युक्त्वा वचनं दैत्या प्रतिगृह्य सरासनम् आकृष्य तरसा चापं जाशब्दं च चकारः नरोऽपि धनुरादाय सनास्ति भ्रांशिलासितान् मुमोच बहुशा क्रोधात् प्रह्लादो परिपार्थिव तान् दैत्यराजस्तपनीय पुंखैश्चिक्षेद बाणस्तरसा समेत्य समीक्ष्य छिन्नाश्च परासु सृष्टानन्यान् मुमोचासुरुषान्वितो वै दैत्याधिपस्तानपि तीव्रवेगैश्चित्वा जघानो रसितं मुनीन्द्रं नरोपितं पञ्चभिरासुगैश्च क्रुद्धो हनद्दैत्यपतिं बाहुदेशे सेन्द्रासुरास्तत्र तयोर्युद्धं द्रष्टुं विमानैर्गगनस्थिताश्च नरस्य वीर्यं युधि संस्थितस्य ते तृष्टुवुर्दैत्यपतेश्च भूयः ववर्ष दैत्याधिप आत्तचापाशिले मुखानम्बुधरो यथापः आदाय सार्गं धनुरप्रमेयं मुमोच बाणाञ्छितहेमपुङ्खान् बभूव युद्धं तुमुलं तयोस्तु जयैषिणो पार्थिवदेवदैत्ययो ववर्षुराकाशपते स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्यानि पृहष्टचित्ता चुकोपदैत्याधिपतिर्हरौ स मुमोच बाणानतितीव्रवेगान् चिक्षेदतान् धर्मसुतासु तीक्ष्णैर्धनुर्विमुक्तैर्विशिखैस्तदासु ततो नारायणं बाणैः प्रह्लादश्चातिकर्षितैः ववर्ष सुस्थितं वीरं धर्मपुत्रं सनातनं नारायणोऽपि तं वेगान्मुक्तैर्बाणैः शिलासितैः तुतो दातीव पुरुतो दैत्यानामधिपं स्थितं सन्निपातोऽम्बरे तत्र दिदृक्षूणां बभूवः देवानां दानवानां च कुर्वतां जयघोषणम् उभयोऽसर्वर्षेण छादिते गगने तदा दिवापि रात्रिसस्सं बभूव तिमिरं महत् ऊचु परस्परं देवा दैत्याश्चातीव विस्मिता अदृष्टपूर्वं युद्धं वै वर्ततेऽद्य सुदारुणं देवर्षयोऽथ गन्धर्वा यक्षकिन्नरपन्नगा विद्याधराश्चारणाश्च विस्मयं परमं ययो नारदा पर्वतश्चैव प्रेक्षणार्थं स्थितौ मुनि नारदा पर्वतं प्राह नेदृशं चाभवत्पुरा तारकासुरयुद्धं च तथा वृत्रासुरस्य च मधुकैटभयोर्युद्धं हरिणा चैदृशं कृतं प्रह्लादा प्रबलासुरो यस्मान्नारायणेन च करोति सत्संयुद्धं सिद्धेनाद्भुतकर्मणा। व्यास उवाच दिने दिने तथा रात्रौ कृत्वा पुनः पुनः चक्रतो परमं युद्धं तौ तदा दैत्यतापसौ नारायणस्य चिक्षेद प्रह्लादस्य सरासनं तरसैकेन बाणेन सा चान्यद्धनुराददे नारायणस्तु तरसा मुक्त्वान्यञ्च शिलीमुखं तदैव मध्यतश्चापं चिक्षेद लघुहस्तकः छिन्नं छिन्नं पुनर्दैत्यो धनुरन्त्यसमाददे नारायणस्तु चिक्षेद विशिखैरासुकूपितः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः परिघं तु समाददे जघान धर्मजं तूर्णं बाहुर्मध्येति कोपनः तमायान्तं स बलवान् मार्गणैर्नवभिर्मुनिः चिक्षेद परिघं घोरं दशभिस्तमताडयत् गदामादाय दैत्येन्द्र सर्वाय समयीं दृढां जानुदेशे जघानासु देवं नारायणं रुषा गदया चापि गिरिवत् संस्थिता स्थिरमानसः धर्मपुत्रोऽति बलवान् मुमोचासु शिलीमुखान् गदां चिक्षेद भगवान् तदा दैत्यपतिर्दृढां विस्मयं परमं जग्मु प्रेक्षका गगने स्थिता सतशक्तिं समादाय प्रह्लादा परवीरः चिक्षेप तरसा क्रुद्धो बलवान् नारायणो रसि तामापतन्त्यं संवीक्ष्य बाणेनैकेन लीलया सप्तधा कृतवानासो सप्तभिस्तं जघानः दिव्यवर्षतं चैव तद्युद्धं परमं तयो जातं विस्मयदं राजन् सर्वेषां तत्र चाश्रमे तदा जगाम तरसा पीतवासाश्चतुर्भुजः प्रह्लादस्याश्रमं तत्र जगाम च गदाधरः
चतुर्भुजो रमाकान्तो रथाङ्गधरपद्मभृत् दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः प्रणम्य परया भक्त्या प्राञ्जलि प्रत्युवाचः। प्रह्लाद उवाच देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सलमाधव कथं न जितवानाजा वह मे तौ तपस्विनौ संग्रामस्तु मया देवा कृता पूर्णं शतं समा सुराणां न जितौ कस्मादिति मे विस्मयो महान्। विष्णुर्वाच सिद्धाभिमौ मदंसौ च विस्मयाकोत्र मारिष तापसौ न जितात्मानौ नरनारायणौ जितौ गच्छत्वं वितलं राजन् कुरु भक्तिं ममाचलां नाभ्यां कुरु विरोधं त्वं तापसाभ्यां महामते। व्यास उवाच इत्याज्ञप्तो दैत्यराजो निरेयावसुरैः सह नरनारायणौ भूयस्तपोयुक्तौ बभूवतुः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे प्रह्लाद नारायणयोर्युद्धे विष्णुरागमन वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमः। राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना। व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। जन्मेजय उवाच संदेहोऽयं महानत्र पाराशर्य कथानके नरनारायणौ शान्तौ वैष्णवांसौ तपोधनौ तीर्थाश्रयौ सत्त्वयुक्तौ वन्यासनपरौ सदा धर्मपुत्रौ महात्मानौ तापसौ सत्यसंस्थितौ कथं रागसमायुक्तौ जातौ युद्धे परस्परं संग्रामं चक्रतु कस्मात् त्यक्त्वा तपि मनुत्तमाम्। प्रह्लादेन समं पूर्णं दिव्यवर्षतं किल हित्वा शान्तिसुखं युद्धं कृतवन्तौ कथं मुनि कथं तौ चक्रतुर्युद्धं प्रह्लादेन समं मुनि कथयस्व महाभाग कारणं विग्रहस्य वै कामिनी कनकं कार्यं कारणं विग्रहस्य वै युद्धबुद्धि कथं जाता तयोश्च तद्विरक्तयो तथा विधिं तपस्तप्तं ताभ्यां च केन हेतुना मोहार्थं सुखभोगार्थं स्वर्गार्थं वा परन्तप कृतमत्युत्कटं ताभ्यां तपा सर्वफलप्रदं मुनिभ्यां शान्तचित्ताभ्यां प्राप्तं किं फलमद्भुतं तपसा पीडितो देहा संग्रामेण पुनः पुनः दिव्यवर्षतं पूर्णं श्रमेण परिपीडितौ न राज्यार्थे धने वापि न दारेषु गृहेषु च किमर्थं तो कृतं युद्धं ताभ्यां तेन महात्मना निरीहा पुरुषा कस्मात् प्रकुर्याद्युद्धमीदृशं दुःखदं सर्वथा देहे जानन् धर्मं सनातनं सुबुद्धि सुखदानीह कर्माणि कुरुते तत्सदा न दुःखदानि धर्मज्ञ स्थितिरेषा सनातने धर्मपुत्रौ हरेरंसौ सर्वज्ञौ सर्वभूषितौ कृतवन्तौ कथं युद्धं दुःखं धर्मविनाशकम् त्यक्त्वा तपा समाधेतं सुखारामं महत्फलं संयुगं दारुणं कृष्ण नैव मूर्खोऽपि वाञ्छति श्रुतो मया ययातिस्थोच्युता स्वर्गान् महीपतिः अहंकार भवात् पापात् पतिता पृथ्वीतले यज्ञकृद्दानकर्ता च धार्मिका पृथ्वीपतिः शब्दोच्चारण मात्रेण पातितो वज्रपाणिना अहंकारमृते युद्धं न भवत्येव निश्चयः किं फलं तस्य युद्धस्य मुने पुण्यविनाशनं। व्यास उवाच राजन् संसारमूलं हि त्रिविधा परिकीर्तितः अहंकारस्तु सर्वज्ञैर्मुनिभिर्धर्मनिश्चये स कथं मुनिना त्यक्तुं योग्यो देयभृता किल कारणेन विना कार्यं न भवत्येव निश्चयः तपोदानं तथा यज्ञा सात्विकात् प्रभुवन्ति ते राजसाद्वा महाभागा तामसात् कलहस्तथा क्रिया स्वल्पापि राजेन्द्र नाहंकारं विना क्वचित् शुभावाप्यशुभावापि प्रभुवत्यपि निश्चयः अहंकारात् बन्धकारी नान्योऽस्ति जगति तले येनेदं रचितं विश्वं कथं तद्रहितं भवेत् ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णुरहंकारयुतास्त्वमि अन्येषां चैव का वार्ता मुनीनां वसुधाधिप अहंकारावृतं विश्वं भ्रमतीदं चराचरं पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु सर्वं कर्मवशानुगं देवतिर्यं मनुष्याणां संसारेऽस्मिन् महीपते रथाङ्गवद् सर्वार्थं भ्रमणं सर्वदा स्मृतं विष्णोरप्यवताराणां संख्यां जानाति का पुनः पुमान् विततेऽस्मिन् संसारे उत्तमाधमयो निशो नारायणो हरे साक्षान्मास्तं वपुरुपाश्रितः कामठं सौकरं चैव नारसिंहश्च वामनं युगे युगे जगन्नाथो वासुदेवो जनार्दनः अवतारान् संख्यातान् करोति विधि
यंत्रितः। वैवस्वते महाराज सप्तमे भगवान् हरि मन्वन्तरेऽवतारान् वै चक्रे तान् शृणु तत्त्वतः। भृगुशापान् महाराज विष्णुर्देववरा प्रभो अवतारान्नेकास्तु कृतवान् अखिलेश्वरः। राजोवाच सन्देहोऽयं महाभाग हृदये मम जायते भृगुणा भगवान् विष्णु कथं सप्ता पितामह हरिणा च मुनेस्तस्य विप्रियं किं कृतं मुने यद्रोषाद् भृगुणा सप्तो विष्णुर्देव नमस्कृतः। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि भृगुशापस्य कारणं पुरा कश्यपदायादो हिरण्यकशिपुर्नृपः यदा तदा सुरैः सार्धं कृतं संख्यं परस्परं कृते संख्ये जगत्सर्वं व्याकुलं समजायत हते तस्मिन् नृपे राजा प्रह्लादः समजायत देवांस पीडयामास प्रह्लादः शत्रुकर्षणः संग्रामो हिभुवद्घोरा चक्र प्रह्लादयोस्तदा पूर्णं वर्षतं राजन् लोकविस्मयकारकं देवैर्युद्धं कृतं चोग्रं प्रह्लादस्तु पराजितः निर्वेदं परमं प्राप्तो ज्ञात्वा धर्मं सनातनं विरोचनसुतं राज्ये प्रतिष्ठाप्य बलिं नृप जगाम स तपस्तप्तुं पर्वते गन्धमादने प्राप्य राजं बलिं श्रीमान् सुरैर्वैरं चकारः यथा परस्परं युद्धं जातं परमदारुणं तथा सुरर्जिता दैत्यादिन्द्रेणामित तेजसा विष्णुना च सहायेन राज्यभ्रष्टा कृता नृप तथा पराजिता दैत्या काव्यस्य शरणं गता किं त्वं न कुरुषे ब्रह्मन् साहाय्यं न प्रतापवान् स्थातुं न शक्नुमो ह्यत्र प्रविशामो रसातलं यदि त्वं न सहायोऽसि त्रातुं मन्त्रविदुत्तम। व्यास उवाच इत्युक्तासो ब्रवीद्दैत्यान् काव्याकारुणिको मुनिः मा भैष्टधारयिष्यामि तेजसा स्वेन भूसुरा मन्त्रैस्तथौषधीभिश्च साहाय्यं वा सदैव हि करिष्यामि कृतोत्साहा भवन्तु विगतज्वरा। व्यास उवाच ततस्ते निर्भया जाता दैत्या काव्यस्य संश्रयात् देवैः श्रुतस्तु वृत्तान्ता सर्वैश्चारमुखात् किल तत्र सम्मन्त्रिते देवा चक्रेण च परस्परं मन्त्रं चक्रुषु संविघ्ना काव्यमन्त्रप्रभावतः योद्धुं गच्छामहे तूर्णं यावन्न चावयन्ति वै प्रसह्य हत्वा शिष्टास्तु पातालं प्रापयामहे दैत्यान् जग्मुस्ततो देवा संरुष्टा शस्त्रपाणयः जग्मुस्तान् विष्णुसहिता दानवा नरिणोदिता वध्यमानास्तु ते दैत्या संत्रस्ता भयपीडिता काव्यस्य शरणं जग्मु रक्ष रक्षेति चाब्रुवन् तान् शुक्रापीडितान् दृष्ट्वा देवैर्दैत्यान् महाबलान् मा भैष्टेति त्वचा प्राह मन्त्रौषधिबलाद् विभो दृष्ट्वा काव्यं सुरा सर्वे त्यक्त्वा तान् प्रयुः किल। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां चतुर्थस्कन्धे भृगुशाप कारणवर्णनं नाम 10। अथैकादशोऽध्यायः। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्यारत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। व्यास उवाच तथागतेषु देवेषु काव्यस्तान् प्रत्युवाचः ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं यच्छृणुद्धं दानवोत्तमः विष्णुर्दैत्यवधे युक्तो हनिष्यति जनार्दनः वाराहरूपं संस्थाय हिरण्याक्षो यथा हतः यथा नृसिंहरूपेण हिरण्यकशिपुर्हतः तथा सर्वान् कृतोत्साहो हनिष्यति न चान्यथा न मे मन्त्रबलं सम्यक् प्रतिभाति यथा हरिं जेतुं यूयं समर्थास्ता मया त्रातासुरानथ तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं कियन्तं दानवोत्तमा अहमद्य महादेवं मन्त्रार्थं प्रव्रजामि वै प्राप्य मन्त्रान् महादेवा दागमिष्यामि साम्प्रतं युष्मभ्यं तान् प्रदास्यामि यथार्थं दानवोत्तमा। दैत्या ऊचुः पराजिता कथं स्थातुं पृथिव्यां मुनिषत्तमा शक्ता भवामोऽप्यबलास्तावत्कालं प्रतीक्षितुं नेताबलिना सर्वे केचिच्छिष्टाश्च दानवा नाद्ययुक्ताश्च संग्रामे स्थातुमेवं सुखावः। शुक्र उवाच यावदहं मन्त्रविद्या मानयिष्यामि शङ्करात् तावद्भवद्भिः स्थातव्यं तपोयुक्तैः समान्वितैः सामदानादया प्रोक्ता विद्वद्भिः समयोचिता देशं कालं बलं वीरैर्ज्ञात्वा शक्तिं बलं बुधैः सेवातः समये कार्या शत्रूणां शुभकाम्यया स्वशक्त्युपचये काले हन्तव्यास्ते मनीषिभिः तदद्य विनयं कृत्वा सामपूर्वं छलेन वै तिष्ठध्वं सुनिकेतेषु मदागमनकाङ्क्षया
प्राप्य मंत्रान् महादेवादागमिष्यामि दानवा युध्यामहे पुनर्देवान् मान्त्रमास्थाय वै बलम् इत्युक्त्वाथ भृगुस्तेभ्यो जगाम कृतनिश्चया महादेवं महाराज मन्त्रार्थं मुनिसत्तमः दानवा प्रेषयामासो प्रह्लादं सुरसन्निधौ सत्यवादिनमभ्यग्रं सुराणां प्रत्ययप्रदं प्रह्लादस्तु सुरान् प्राह प्रश्रया वनतो नृपः असुरैः सहितस्तत्र वचनं नम्रतायुतं न्यस्तशस्त्राभयं सर्वे निस्सन्नाहास्तथैव च देवास्तपश्चरिष्यामः संवृतावल्कलैर्युता प्रह्लादस्य वचा श्रुत्वा सत्याभिव्याहृतं तु ततो देवा निवर्तन्त विज्वरामुदिताश्च ते न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु विनिवृत्तास्तदासुरा विश्रब्धासु गृहान् गत्वा क्रीडासक्तासु संस्थिता दैत्यादम्भं समालम्ब्य तापसास्तपी संयुता कश्यपस्याश्रमे वासं चक्रु काव्यागमेक्षया काव्यो गत्वाथ कैलासं महादेवं प्रणम्य च उवाच विभुना पृष्टा किं ते कार्यमिति प्रभो मन्त्रान्निक्षाम्यहं देव येन सन्ति बृहस्पतौ पराजयाय देवानाम् असुराणां जयाय च व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य सर्वज्ञा शङ्करः शिवः चिन्तयामास मनसा किं कर्तव्यमता परं सुरेषु द्रोहबुद्ध्यासौ मन्त्रार्थमेषां प्रथम प्राप्ता काव्यो गुरुस्तेषां दैत्यानां विजयाय च रक्षणीया मया देवा इति संचिन्त्य शङ्करः दुष्करं व्रतमत्युग्रं तमुवाच महेश्वरः पूर्णं वर्षसहस्रं तु कणधूमवाक्षिरा यदि पास्यसि भद्रं ते ततो मन्त्रा न वाप्स्यसि इत्युक्तोऽसौ प्रणम्य संबाढमित्यब्रवीद्वचा व्रतं चराम्यहं देव त्वया ज्ञप्ता सुरेश्वर व्यास उवाच इत्युक्त्वा शङ्करं काव्यश्चकार व्रतमुत्तमं धूमपानरता शान्तो मन्त्रार्थं कृतनिश्चया ततो देवा परिज्ञाय काव्यं वृतरतं तदा दैत्यान्दम्भरताश्चैव बभूवुर्मन्त्रतत्परा विचार्य मनसा सर्वे संग्रामायुध्यता नृप ययुर्धृतायुधास्तत्र यत्र ते दानवोत्तमा तानागतान् समीक्ष्याथ सायुधान् दंसितास्तथा आसंस्ते भयसंविघ्ना दैत्यादेवान् समन्ततः उत्पेतु सहसा ते वै सन्नद्धान् भयकर्षिता अब्रुवन् वचनं तथ्य ते देवान् बलदर्पितान् नस्तशस्त्रे भयवती आचार्ये वृतमास्थिते दत्त्वा भयं पुरा देवा सम्प्राप्ता नो जिघांसया सत्यं वाक्वगतं देवाद्धर्मश्च श्रुतिनोदिता नस्तशस्त्रा न हन्तव्या भीताश्च शरणं गता देवा ऊचो भवद्भिः प्रेषिता काव्यो मन्त्रार्थं कोकेन च तपो ज्ञातं हि युष्माकं तेन युध्याम एव हि सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धा शस्त्रपाणयः शत्रुश्छिद्रेण हन्तव्य एष धर्मः सनातनः व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्या विचार्य च परस्परं पलायनपरा सर्वे निर्गता भयविह्वला शरणं दानवा जग्मुर्भीता ते काव्यमातरं दृष्ट्वा ता न ते सन्तप्ता न भयं च ददावथ काव्यमातोवाच न भेतव्यं भयं त्यज तदानवा मत्सन्निधौ वर्तमानान्नभिर्भवितुमर्हति तच्छ्रुत्वा वचनं दैत्या स्थितास्तत्र गतव्यथा निरायुधाय सम्भ्रान्तास्तत्राश्रमवरेश्वरा देवास्तान् विद्रुतान् वीक्ष्य दानवास्ते पदानुगा अभिजग्मु प्रसह्यैतान् न विचार्य बलाबलं तत्रागतासुरा सर्वे हन्तुं दैत्यान् समुद्यता वारिता काव्यमात्रापि जग्नुस्तानाश्रमस्थितान् हन्यमानान् सुरैर्दृष्ट्वा काव्यमातातिव्येपिता उवाच सर्वान् सनिद्रास्तपसा वै करोम्यहम् इत्युक्ता प्रेरिता निद्रा तानागत्य पपात च सेन्द्रा निद्रा संयाता देवा मूकवदा इंद्रं निद्राजितं दृष्ट्वा दीनं विष्णुरभासत मां त्वं प्रविशि भद्रं ते नये त्वां च सुरोत्तम एवमुक्तस्ततो विष्णुं प्रविवेश पुरन्दरः निर्भयो गतनिद्रश्च बभूव हरिरक्षितः रक्षितं हरिणा दृष्ट्वा चक्रं तत्र गतव्यथं काव्यमाता तथा क्रुद्धा वचनं चेदमब्रवीत् मघवस्त्वां भक्षयामि
स विष्णुं वै तपोबलात् पश्यतां सर्वदेवानाम् ईदृशं मे तपोबलं। व्यास उवाच इत्युक्तौ तु तया देवौ विष्णुविन्द्रौ योगविद्यया अभिभूतौ महात्मानौ स्तब्धौ तौ सम्बभूवतुः। विस्मितास्तु तदा देवा दृष्ट्वा तावतिबाधितौ चक्रो किलकिला शब्दं ततस्ते दीनमानसा क्रोशमानान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णुं प्राह सचीपतिः विशेषेणाभिभूतोऽस्मि त्वत्तोऽहं मधुसूदन जह्येनां तरसा विष्णु यावन्नौ न दहेत् प्रभो। तपसा दर्पितां दुष्टां मां विचारयेद् माधव इत्युक्तो भगवान् विष्णु चक्रेण प्रथितेन च चक्रं सस्मार तरसा घृणां त्यक्त्वाथ माधव। स्मृतमात्रं तु सम्प्राप्तं चक्रं विष्णुवशानुगं दधार च करे क्रुद्धो वधार्थं शक्रनोदितः गृहीत्वा तत्करे चक्रं शिरश्चिक्षेदसंघसा हतां दृष्ट्वा तु तां शक्रो मुदितश्चाभवत्तदा देवश्चातीव सन्तुष्टा हरिं जय जयेति च तुष्टुभुर्मुदिता सर्वे सञ्जाता विगतज्वरा। इन्द्रविष्णु तु सञ्जातौ तत्क्षणात् हृदयव्यथौ स्त्रीवधाञ्छङ्कमानौ तो भृगो शापं दुरत्ययम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे शुक्रमातुर्वधवर्णं नाम एकादशः। श्रीजगदम्बिकायै नमः। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।